in Bengal has been marred by violence and with extreme controversy. Viewers, this afternoon, BJP star campaigner, the legendary Mithun Chakrabarty's roadshow for the BJP was attacked in Bengal's Medinipur, where he was campaigning for Agnimitra Paul. Now, he hasn't made a big deal of it, but the attack seemed premeditated, and the allegation is that it was TMC workers. As the BJP began countering that, the TMC, bottles were thrown, and soon enough there was complete chaos. We have the visuals, we'll play it a little later. Now, to put it in context, this is on a day when Shuvendu Adhikari's office, about 1 hour back, has been raided by the Bengal police. They have forcefully entered his office in Kolaghat. Shuvendu Adhikari said on record this evening that the raid itself may have been at the behest of Mamata's nephew, Abhishek Banerjee. Yeah. Mamata in the last 3 days has also been taking on the Hindu institutions and labeling them as pro-BJP. So if you look at the sum total of what is happening in Bengal today, does it reveal a great sense of nervousness in the Trinamool? Mithun Chakrabarty, who has been campaigning extensively throughout the length and breadth of West Bengal, has been saying everywhere that he is positive about the fact that there is going to be a change in Bengal. He joins me live now. Mithunda, Arnab here. Can you hear me? हाँ जी हाँ बोलो नमस्कार Namaskar. কেমন আছে? I can hear you. Yes, nice to speak to you, Mithunda. Balo, I can hear you. You're in the middle of the campaigning. You've been very, very active. First, I know you have not made a big deal of it, but there was, wherever you are going, you are seeing these Trinamool people. Today there was an incident, bottles were thrown. Some people are saying this is a premeditated attack. You yourself said this is not a big deal. But the fact is it reflects the animosity on the ground. See, one of the point is, I did not make a big deal only because of one thing. Because this is usual for this party. They have nothing to give to West Bengal now except violence. So this is something, if I talk about it, I'm giving more importance to it. That's why I said, chalo, aage chalo. Okay. If you have a recorded things, I told them, I saw that. Go ahead. So because everywhere you see there is no policy, there is no talk of Rajniti, there is nothing, only two personal attacks, then condemning somebody, and third is violence. Nothing else you will hear from them. Yeah, but you know, Mithunda, you are not just a BJP leader or a former member of parliament, you are also a legend, and you are loved by people in Bengal across political party lines. So I just found it very strange that anyone would target your campaign. I mean, I can understand someone targeting even Shuvendu's campaign, but I would find it difficult that they would target Mithun Chakrabarty's campaign. Because, you know, you at one level also go beyond politics. So I find that strange personally. You're correct. Absolutely, your assessment is absolutely correct. Even I did not expect it. But then also, behind my back, it was always there. If it is not tomorrow, if it is not tomorrow, when? Because after the portion of election is over, they could not do much. So another, I think, 2 and 3 left. So, and as you said, you can see every day I get up at 6 o'clock. I'm ready by 9, I leave. Because I told them, I'll complete all the constituencies, I'll campaign. And till now, everything is going very fair, but behind my back, I always be very alert, kab, kidhar, kahan. So they'll be trying to find excuses. They're trying to provoke people. Ye sir karo, ye karne se ye hoga. Rather, I have been telling my कार्यकर्तास and the cadres कि तुम लोग तृणमूल ऑफिस से at least 1-2 किलोमीटर दूर रहना. And or this ladies campaign कि at least 4-5 10 किलोमीटर तक आसपास में कोई नहीं रहना उनकी गाड़ी के आसपास कि को बहाना ढूंढेगी
फिर बोलेगी ये देखो बीजेपी ने कर दिया. Even I've been requesting my people, not others. Mithunda, want to ask you more a personal question. You know, in February, there was a lot of concern about your health. I was also very concerned. You are such a dynamic person, and then you put out a video saying you are completely all right. You see, you are campaigning so aggressively. When I started Republic Bangla, you know, then also 2021, you were campaigning very aggressively. This time, even more. You are giving a lot into the campaign, even physically. What is keeping you going? I mean, what is, obviously you don't have any great personal political aspirations, but something must be motivating you to do so much physically in this heat, to be campaigning so much. I'll be very frankly, because Big Boss also asking me कि तुम आपको कुछ नहीं चाहिए, बोलो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए. क्यों इसलिए नहीं चाहिए सर, सब पार्टी करेंगे और उसके बदले में कुछ मांगेंगे, हाँ. तो फिर पार्टी कौन देखेगा? So I took that challenge and I took that responsibility कि तुम लोग लड़ो, तुम लोग जीतो, मैं उसमें मददगार बनूंगा, हेल्प करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन पार्टी का ख्याल मैं रखूंगा. अगर पार्टी स्ट्रांग होगा, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए. You should not forget it. If the party is strong, then candidate is strong. If the candidate is strong, there is the chances of winning. अगर खाली हम जीतेंगे, हम करेंगे, then खोखलापन चालू हो जाएगा. Already in Bengal, we are not very strong as party wise. हमारे बहुत सारे प्लस माइनस हैं, बट ठीक है, बट सब पार्टी में ही होती है. बट आई एम फाइटिंग ऑन दैट बेसिस कि मुझे किसी भी हालत में बंगाल में फिर से वो बंगाल वापस लाना है. बिकॉज जब तक दिस गवर्नमेंट इज देयर, देयर गोइंग टू बी chaos, देयर गोइंग टू बी वायलेंस, देयर गोइंग टू बी करप्शन, एंड करप्शन हैज रीच्ड इट्स पीक. I don't know how much more will come out. In fact, you said अगर that. हम लोग अभी से एक परिवर्तन Mithunda, चाहिए. you said corruption and not Muslims are Mamta's core vote bank. No, you said that. No. I said. Now, how do you you have been with left before. You have been with Trinamool before. Now you are with BJP. How do you compare it? And what made you make that comment that corruption and not Muslims are the core vote bank of Trinamool? See, सभी को लगता है कि मुस्लिम भाई लोग इनको डरा के, आप देखिए ना, सिंपल चीज CAA समथिंग इस नेवर देख के मुस्लिम को भगा देंगे. लेकिन प्रचार कैसे चला कि ये CAA आएगा, तुम लोग को निकाल देगा, हिंदुस्तान के बाहर चलोगे, भूखे मर जाओगे, ये कर जाओगे. एंड आई कंटिन्यूअसली फाइटिंग एंड टेलिंग CAA ये नागरिकत्व के बारे करा. नो, इट इज नॉट फॉर taking your citizenship away, is to give you citizenship. I have been campaigning vigorously on this. और आज क्या हुआ? वही हुआ ना. अब तो सर्टिफिकेट भी बांटने लग गए. अभी उनकी भी चाल में, टोन में फर्क आ गया. देखिए, सेकंड थिंग क्या कह रहे हैं, आप जरा सुनिएगा कि 100 दिन का पैसा नहीं मिल रहा है, गाने में भी डाल दिया. तो मैं पब्लिक को समझाता हूं कि ये क्या बीजेपी ने आपका पैसा रोका है? ये क्या बीजेपी का पैसा है? क्योंकि देखिए, यहाँ के लोग गरीब हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनको झूठ भी बोलो तो सच समझ लेते. एंड शी इज एक्सपर्ट इन दिस. अब ये बताइए, ये क्या बीजेपी का पैसा है? ये हमारा, आपका, सबके टैक्स पेयर का पैसा है. बीजेपी कौन होते हैं पैसा रोकने वाले? ये तो कैग है, CAG, कैग. ये कैग्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर एवरी स्टेट फाइनेंशियल एस्पेक्ट. तो उन्होंने सबको पास कर दिया कि महाराष्ट्र को दे दो, राजस्थान का हिसाब मिल गया, उससे स्टेट का, एक्सेप्ट बंगाल जिसका हिसाब नहीं मिला. और कैग ने बोला जब तक हिसाब नहीं मिलता है पैसा नहीं देना. और पैसे के अमाउंट जानते हैं आप साहब, 2,30,000 करोड़. ये पैसा किधर गया? अभी क्या बोलेंगे? टर्निंग पॉइंट आई है क्या? ट्राइबल लोगों को. मिठुंदा, हर चीज की टर्निंग पॉइंट होती है. क्या आपको लगता है कि बंगाल में टर्निंग पॉइंट आई है? Is there a turning point this time? सर इतना मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि करप्शन, मैं क्यों बोल रहा हूँ करप्शन वोट बैंक है, इसीलिए कि इनको मालूम है अगर जैसे ही करप्शन हट गया ये सरकार गिर जाएगी. इसके लिए वोट की जरूरत नहीं है. बिकॉज द करप्शन इज देयर. दोज हु आर करप्टेड, दे आर तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर. वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये सरकार जाए. बट मिठुंदा, उन लोग लड़ेंगे, मरेंगे, एक आखिरी खून बहा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है
ये एक आखिरी सवाल, मुझे तो ताजुब होता है क्योंकि इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम पर जिस तरह से इन्होंने अटैक की है, तो कुछ तो और, मतलब व्हाई वुड यू अटैक these great Hindu institutions so directly unless you think that you will get some Muslim vote bank out of it? What is the logic here? ये तो इट इज तो ऑलवेज देयर, बट एक बात बताता हूँ जी। इनके लिए उनकी वो जो बोले सब सही, हम जो बोले गलत। ये जो एक से मिले है साहब जहांगीर, क्या नाम है उनका पूरा, एक सेकंड, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा सर। अच्छा, वो जो सॉरी हुमायूं कबीर साहब, इन्होंने क्या कहा था आपको मालूम है सर? कि कहा था मुझे 2 घंटा दीजिए, हम लोग 70% मुस्लिम है, ये 30% हिंदू है, हम काट के भागीरथी में डाल देंगे। इससे बड़ा, इससे ज्यादा भयानक कोई शब्द हो सकता है वायलेंस के? She has not reacted, she has not condemned. ये क्या बात कर दिया कि काट के डाल देंगे? सर मैं एक बात बोलूं, ये जो सारे प्रतिष्ठान है ना, दे आर द गार्डियन एंजल्स ऑफ सनातन धर्म, और उसके ये प्रतिवाद के लिए ये महाराज जी ने एक मीटिंग बुलाई थी इसके प्रतिवाद में। आई एम वेरी सॉरी टू से सर, इवन योर चैनल डिड नॉट कवर इट। आपके चैनल, कोई चैनल ने इसके बारे में एक बात नहीं उठाई, बैठ के बात करे, इसको बताया कि इस आदमी को जेल में भरो ऐसी बात करने के लिए। नोबडी। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एज ए सनातनी, हमको भी दुख हुआ है। हम इतने कमजोर पड़ गए क्या काटेंगे डाल देंगे? आइए पहले काटिए, मुझे काटिए, आइए। हर मोहल्ले में हर कुत्ता शेर होता है। छोड़िए ना, आप आइए, इधर आइए, मैं आता हूँ। चलिए पहले मुझे काटिए और भागीरथ में डाल दीजिए, अगर आपके दिल में शांति है। हम लेकिन बात नहीं करेंगे क्यों? हमारे लीडर्स हमको नहीं, सुनिए सर, हमारे लीडर्स बोलते हैं हिंसा नहीं, संविधान से लड़के हराएंगे हम। हमारे लीडर्स, हमारे बड़े लीडर्स हमको भी कहा है कि मिठुंदा नहीं, लेकिन मेरे मुंह से अगर ऐसे कुछ निकल जाए ना, ऐसी बातें अनबदा बंगाल में बहुत भारी पड़ जाएगा, मैं आपको बोल देता हूँ। लेकिन हम वो इतने नाला क्या बोलते हैं, इतने कमजोर और बच्चे नहीं है कि ऐसी बातें करेंगे। लेकिन बातें हुई है, जिसके बदले में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, वही उनका गुनाह हो गया। जी, क्यों बुलाई आपने? पर उस पर भी बहुत people are very angry about that, Mithunda. But you know, we will keep tracking your campaign because you are one of the star campaigners, not just in Bengal but of 2024. I wish you good health and a lot of positive spirit. And whenever you come on the channel, आपको मैं बोलता हूँ, आपके चैनल में लाइए इस टॉपिक को। मैं लाऊंगा और कोई चैनल अगर लाएगी, आपको पता है मिठुंदा सिर्फ रिपब्लिक नेटवर्क होगी, हम जरूर लाएंगे 100% I know, that's why I'm very surprised even you did not pick it up. No, we will pick it up. We will pick it up for sure. Thank you, Mithunda. Thank you very much. That's Mithun Chakrabarti, ladies and gentlemen. Always such a pleasure to speak to him. A lot of positive energy, totally in the thick of the Bengal campaign. And now, viewers, before I go into the break, the way I see it as of now, the way I see it is that the violence in Bengal is proof of a very, very frazzled Mamata Banerjee and a very insecure TMC, a TMC which is extremely scared of any individual with a mass appeal. History is witness to the fact that Mamata Banerjee has not allowed any tall mass leader to rise within her own party, and that is why Shuvendu Adhikari probably walked away. And the only person apart from herself is her nephew, who has been allowed to gain some prominence. But this aunt and nephew combo, which is getting increasingly and growingly insecure of the RSS cadre's boom in Bengal, can they run Bengal in this way? In a way that power is centered in the hands of one or two, and everyone from political opponents to the people of Sandesh Khali and are subjugated to that supreme political power. I think it's a matter of time. That's the way I see it. Ladies and gentlemen, taking a short break. The big political debates are up next. Time for a quick breather. Arnab will be right back with the debate.